Rajesh ji is a mechanical engineer with over 15 years of field experience working for large EPC contracts. He has also worked abroad in Jordan. Post that, he has been an entrepreneur for over last 10 plus years. Rajesh ji has been associated with Lions Club for over 15 plus years now. He has held various positions in Lions Club. He was the former founder president of Lions Club of Vasai Pearls, having about 54 line members, and an advisor of a very dynamic Leo Club of Vasai Pearls. He has held many responsible positions in Lions. So one was Lions District Body Governing Body. He was Additional District Cabinet Secretary in the centennial year of Lions International. Rajesh ji has been associated with JanyuTech for over the last 4 plus years now, and he heads our entire operations at JanyuTech. So Rajesh ji, if you could please take us through your story of your journey as well as the work in NGOs. Sure, Hemanji. Thank you very much for a brief introduction. I've been, as Hemanji said, I've been associated with Lions Club from last more than 15 years. And as being associated with some kind of social service, that was also a point of contact for me to get in touch with JanyuTech. Since our founder, managing director and founder of JanyuTech, Abhimanyu ji, also is connected very well with the social service through RSS. And RSS was conducting one educational program in Vasai for various schools, wherein Lions Club supported that event, and we came in contact. And Abhimanyu said that since we share the same ideologies and all, why don't you join JanyuTech and let's work towards some professional goal as well. So though Dimag se our targets, ambitions are different for the JanyuTech, Dil se we both are connected with this social service, and that is why Abhimanyu said that better you share your some thoughts on this area, that NGO and its working. So I'd like to share my experience about mainly why one should do or some social service, connect with any of the NGO. In case you feel like doing some social service, then how you can create, or what are the reasons that may attract you towards some social service or an NGO. Then what are the points, checklist, before getting into any association with some NGO and all? What are the things one should look at? Then what are the challenges? Once you're into the NGO, you want to do a lot of work. लेकिन क्या-क्या challenges आ सकते हैं वहाँ पे? The challenges, whatever the experience I have, I'll share here. And the advantages of, getting into some social service or NGO work. That is what is over the entire session. I'd like to cover these all things, which I feel are relative to this topic today. And since I am associated with Lions Clubs for so many years, the references or relative dates or anything will come up which will be as associated with Lions Club only. That doesn't mean that there are no other NGOs doing work, but since I am associated with Lions Club, there may be more references of Lions Club in today's talk. A little bit about Lions Club. Lions Club International is the world's largest NGO. It's been in existence since last more than 100 years, founded in 1916 by Mr. Melvin Jones in the United States. We completed centenary year in 2016, and as Hemanji said, I was the Additional District Cabinet Secretary in the year 2016. Having presence in more than 210 countries, more than 1.4 million line members, operating through various clubs, around more than 47,000 clubs worldwide. Lions of Vasai Pearls, which was founded by me along with our team in the year 2013. We are a small group of people trying to do our bit of a social service, what we feel like. And Lions Club, both areas में काम कर रहा है. In various areas it works. Let it be health, environment, social service, education. एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लायंस क्लब ने लिया था. We started a site first campaign in the year 1990, which was inspired after the appeal by a lady, Helen Keller. She was a healthy child when she was born, but unfortunately at the age of 2, due to her illness, she became blind, deaf and dumb.
But with the help of her teachers and parents, she overcome all these adversities and she became a very knowledgeable person. She had wrote many books, very inspirational quotes, and one of the her quote, which has inspired many across the world, is it goes like this: the only thing which can be worse than being blind is having sight but no vision. What a deep meaning in it. कि दुनिया में सिर्फ आंखें नहीं होना या ब्लाइंड होना ऐसा जरूरी नहीं है कि दैट इज एडवर्सिटी. बहुत लोगों को आंखें होती है बट विजन नहीं रहता है व्हाट इज टू डू इन द लाइफ इन फ्यूचर. अभी ये सोशल सर्विस या एनजीओ के साथ काम क्यों करना है? सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट है कि और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द सेल्फ सेटिस्फैक्शन. आफ्टर डूइंग सम वर्क फॉर द सोसाइटी, द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन वी गेट इज बियॉन्ड वर्ड्स. और अभी कभी there are many trigger points for anyone to get into the social service. Reasons can be different for different people. जैसे कि some people have a self desire, मतलब वो चाहते हैं कि कुछ करें सोसाइटी के लिए. They are self motivated people. उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, which was in my case. When I was always knowing about Lions Club. वैसे में Lions Club पहले से था. So I was watching the people doing that work. And I found one of my friend working for Lions Club, associated with Lions Club in Vasai, is Surya Prakash Pundapat. So I went and asked him, what is this Lions Club and what is this? I want to do this. I want to get associated with Lions Club. I want to do some social service. And this is how I got associated with Lions Club. So this is the one reason people may think कि मुझे कुछ करना है, so they go searching for this opportunity or platforms to get associated. Second is the social awareness. अभी आजकल देख रहे कि सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद एवरीथिंग. लोग कहीं पे गए तो पहले सोशल मीडिया पे डालते हैं. सेम वे लॉट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलवेज पोस्टिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट्स, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स डालते रहते हैं. सो हमको पता चलता है कि ये सोसाइटी में जरूरत है, ये संस्था ये काम कर रही है. तो उस वजह से सम पीपल में गेट अट्रैक्टेड कि बाबा चलो जाके देखते हैं क्या है, व्हाट इज दिस एनजीओ डूइंग वर्क एंड हाउ आई कैन help them or I can get associated with them. This is the one way of getting attracted to the NGO. Sometimes it is some incidents. Unfortunately, हम लोग देख रहे हैं कि since last 2 years, 3 years, we have been through worst pandemic. इस pandemic में बहुत लोगों की life change हो गई है. The people were doing very well, happy families. पूरा upside down हो गया. The main earning member of the family, somehow because of his sad demise, पूरा इक्वेशन चेंज हो जाता है. एंड दैट सडनली व्हेन इट इज अमंग द क्लोज सर्कल ऑफ आवर्स, वी फील लाइक अरे समथिंग कुछ करना चाहिए इनके लिए. वी हैव बीन नोइंग देम, वी हैव बीन सीइंग देम, दे आर गुड फैमिली, बट नाउ दे आर इन नीड. सो वी शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग. सो दिस कैन बी अ ट्रिगर पॉइंट फॉर समवन टू डू सम सोशल सर्विस, get associated with some thing, or a self-driven crowd funding can be initiated at this level. और चौथी बात ये भी हो सकती है कि एट सम ऑफ द अदर पॉइंट यू हैव बीन हेल्प बाय समवन. जरूरी नहीं कि आज की हमारी जो पोजीशन है वही बहुत पहले रही होगी. हम जब भी नीड में थे, हमारी जरूरत थी, नॉट नेसेसरी इट इज द फाइनेंशियल नीड, इट कैन बी अ इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग काइंड ऑफ थिंग. तो किसी ने हमको हेल्प की रहती है. एंड व्हेन वी आर नाउ स्टेबलाइज, वी आर रीच सर्टेन लेवल, तो हमको लगता है इट्स नाउ आवर टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी. So this can be one valid point for someone to turn to the NGO and get involved into social service. Social service तो बहुत तरह की होती है. Not necessary कि हर बार कोई NGO या संस्था से होती है. अपने अपने लेवल पे सभी लोग सब काम करते रहते हैं. So इसको कुछ ब्रांडिंग देने की जरूरत नहीं कि if you are associated with NGO, that means you are a social person or you are doing some service to society. On individual level also you can do a lot of things. But जब हम चाहते कि कुछ बड़ा काम करें, सीरियस काम करें, तो एक टीम की जरूरत होती है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, एक संस्था की जरूरत होती है. ऐसे वक्त में इट इज डेफिनेटली नेसेसरी दैट यू गेट एसोसिएटेड विद सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से इस फील्ड में काम कर रही हो, ताकि आप कुछ अपने आइडिया शेयर करके लाइक माइंडेड पीपल के साथ में कुछ बड़ा काम कर सकें. तो ये नेक्स्ट स्टेप है कि जब आप डिसाइड करते हैं कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ, तो सबसे पहले क्या करना है? एक तो सवाल सबसे ये पूछना है पहले खुद से कि डू आई रियली वांट टू डू दिस,
या एक टेम्परेरी फीलिंग है? क्योंकि ये टेम्परेरी फीलिंग है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं चलती। एक शुरू का जोश निकल गया, 2-4 महीने, 6 महीने, then again you are back to your work, you slowly get disassociated from that association or a group and you back to your routine, this thing. उसमें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि not everyone can devote a maximum time for that, but you are ready as and when जरूरत है मैं कर सकता हूँ. Secondly, how I want to get involved into work. 2 तरह की जरूरतें होती है कोई भी संस्था को काम करने के लिए. You need a physical presence of volunteers and also we need a financial support. तो किसी लोगों के पास पैसा होता है पर टाइम नहीं है, और कुछ लोग हैं जो टाइम दे सकते हैं लेकिन इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, और कुछ लोग दोनों बैलेंस कर सकते हैं. So you need to prioritize कि when I want to get associated with this organization, so मेरा level of contribution and involvement कितना रहेगा, ये पहले से अगर डिसाइड रहेगा, so you can go along with that NGO or a social organization. तो better decide it first. बाद में ये भी सोचना है कि अगर मैं कुछ संस्था के साथ में जुड़ जाऊं, is it going to affect my existing commitments? क्योंकि हम तो ऐसे खाली बैठे नहीं है ना, everyone is busy. एंड हम लोग देखते हैं ज़्यादातर कि सोशल सर्विस में लोग देखते हैं who are always reaching the fag end of their career और ऑलरेडी रिटायर हो चुके, क्योंकि लोगों का नज़रिया ऐसा है कि रिटायर होने के बाद में कुछ नहीं है तो कोई संस्था के साथ जुड़ जाओ. तो डेफिनेटली फॉर द यंग पीपल हु आर करियर ओरिएंटेड, अभी उनका प्रायोरिटीज डिफरेंट है, तो उनको ये पहले जरूर सोचना चाहिए कि मेरे एग्जिस्टिंग कमिटमेंट टुवर्ड माई प्रोफेशन एंड टुवर्ड माई फैमिली, आर दे गोइंग टू गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ माई इन्वॉल्वमेंट इन द एनजीओ वर्क? अगर है तो कितना टाइम मुझे देना चाहिए, ताकि एक कुछ अच्छी चीज करने जाए और जो ऑन गोइंग प्रेजेंट चीज है दैट शुड नॉट गेट डिस्टर्ब. So that clarity on the day one is very much important. अभी अगर अब जाना है, ये सब पॉइंट हमने सोच लिया कि yes, let us go ahead and get associated with some NGO for doing a better work. तो फिर किस संस्था के साथ जुड़ना है, किस ग्रुप के साथ जुड़ना है, ये सब डिसाइड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आप किसी संस्था के साथ जुड़ोगे तो उनका बैकग्राउंड चेक आपको मालूम होना चाहिए, वो लोग प्रॉपरली कोड एथिक्स कंडक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ आपको चेक करना जरूरी है. उसके साथ ही एक आपका बेसिक हेल्पिंग नेचर एंड एटीट्यूड होना, दैट इज ऑल्सो ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जब तक ये दिल से नहीं आता है तब तक आप सोशल सर्विस नहीं कर पाओगे. दूसरी बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि यू हैव टू बी अ गुड टीम मेंबर. जब आप कोई संस्था में काम करना चाहते हो तो आपको एक टीम का हिस्सा बन के काम करना होता है. अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हो, सोशल सर्विस कर रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे टाइम नहीं है बट आई वांट टू डोनेट अ पर्टिकुलर अमाउंट एवरी मंथ टू एनी ऑर्गेनाइजेशन. बहुत से ऑर्फनेजेस है, बहुत से ओल्ड एजेस होम है जो ऐसे डोनेशंस के ऊपर चलते हैं. सो उस जगह पे अगर आप सिर्फ मंथली कंट्रीब्यूट करके नो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट करो तो ऐसे में कहीं भी आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओनली फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इज देयर. बट अगर आप चाहते हैं कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व होकर कोई संस्था में काम करें, देन यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम. आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट प्रोफेशन से लोग आते हैं टू डू द वन गोल ऑफ सोशल सर्विस. Commitment is also very much important characteristics that will require to work with any NGO. क्योंकि जब आप सोशल सर्विस शुरू करते हैं तो बहुत से लोगों के पास आप पहुंचते हो. शुरू में लोगों को पता नहीं रहता है. Then once people start knowing that अरे XYZ person is into social service, they have a good organization, they are doing some work for the society, और इनके पास हमारी ज़रूरत लेके जाए हम तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है. सो पीपल कम टू यू विथ लॉट ऑफ होप, एंड द पर्सन हु इज इन नीड, उसकी होप की कोई सीमा नहीं होती है. डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल एनीवन कि हर एक आदमी की पूरी नीड हम लोग कंप्लीट कर सके. सो बिफोर यू कमिट एनीवन एनीथिंग दैट वी विल बी एबल टू मीट योर नीड, विल बी एबल टू प्रोवाइड यू विद द असिस्टेंस, यू हैव टू मेक श्योर दैट इसकी पूरी तैयारी हमारी तरफ से हो गई है. तो वट एवर यू कमिट
टू एनी पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल हो, कोई ऑर्फनेज हो, कोई ओल्ड एज होम हो, कि हम ये आपके लिए करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये हवा की बात नहीं हो, जैसे पॉलिटिशियंस सब जगह पे बोलते हैं कि विल डू इट फॉर यू, विल लुक इनटू इट. So unless you are committed to yourself, don't give the commitment ahead. That is very much important यहाँ पे. And discipline, since you are a part of a good organization, उस organization के code of ethics, conduct सब आपको follow करनी ही है. कोई event पे सब मिल रहे, you have to be there on time, you have to be attentive, you have to do the responsibilities जो आपको allot की है, क्योंकि it's a बड़ा इवेंट रहता है, हर एक के टीम्स बना के डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. ये एनजीओ इवेंट इज नो लेसर देन एनी कॉर्पोरेट इवेंट. सेकेंडली, योर कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सोशल सर्विस इज नथिंग बट कनेक्टिंग विद द पीपल. आप लोगों के पास जाते हो, लोगों के साथ जाते हो, लोग आपके पास आते हैं. सो हाउ यू कम्युनिकेट विद देम, दैट इज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिकॉज जरूरी नहीं कि हमको नीड देखने के लिए बहुत दूर दूर जाना है. अगर हम आपके आसपास ही देखें, अपने आसपास देखें, अपने क्लोज सर्कल में देखें, अपने ऑफिस में देखें, अपने कलीग्स में देखें, तो बहुत लोगों की बहुत जरूरत होती है. जस्ट दे शुड फील दैट कंफर्टनेस टू ओपन अप टू यू. सो यू शुड बी दैट काइंड ऑफ पर्सन जो किसी से कनेक्ट हो पाए इजीली, उनकी नीड समझ सके, ताकि वो कोशिश करें हम लोग के वी कैन सॉल्व इट आउट. बिकॉज वी आर जस्ट अ मीडिया. कोई भी एनजीओ या कोई इंडिविजुअल, जैसे मैंने कहा कि हम हर एक की हर डिमांड, हर नीड पूरी नहीं कर सकते, बट हम लोग एक जरिया है. इन लायंस क्लब द वे वी वर्क, हमारे पास कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है, सो इट इज पुट अप अक्रॉस इन आवर क्लब्स मीटिंग, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये संस्था की, ये पर्सन की ये नीड आई है. कोई स्कूल की बच्चे की फीस है कि फादर एक्सपायर्ड इन कोविड, नॉट एबल टू पे द फीस ऑफ द स्कूल फ्रॉम 2 years, उनका अभी स्कूल से निकालने का टाइम आ गया. सो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? वी इवैल्यूएट दैट. कैन वी अरेंज फॉर द फीस, और कैन वी यूज आवर कनेक्ट्स एंड गो टू टॉक टू द स्कूल मैनेजमेंट फॉर गेटिंग सम डिस्काउंट. अगर हमारे पास फंड्स नहीं है तो थोड़े बहुत हमारे पास है, और किसी से हम अपील करके फंड्स जमा कर सकते हैं कि नहीं. ये पॉसिबिलिटीज होती है, बस आपको समझ के उसको प्रॉपर वे में पुटअप करना बहुत जरूरी होता है. एंड एज आई सेड, अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, बिकॉज कोई भी इवेंट है उसे सक्सेसफुल करने के लिए एक टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है. माइक्रो लेवल पे डिटेल में बहुत काम करने की ज़रूरत होती है. हम लोग अगेन इन द लायंस क्लब देयर इज़ वन विलेज नियर ढेका लेकर के है. यहाँ पे हर साल हम लोग एक प्रोजेक्ट मेला जैसा करते हैं, क्योंकि जनवरी इज़ अ सर्विस वीक फॉर अस, एंड इन द फर्स्ट वीक जनवरी उस जगह पे इट्स अ ट्राइबल विलेज. We make a mela, जहाँ पे we do a medical camp, we provide some food grains, we provide some household material like mattresses, bed sheets and all, slippers, chappals. Believe me, the tribals, for tribal the chappal is a luxury, कि उन्होंने कभी चप्पल पहनते नहीं है, वो पूरे जंगल में ऐसे ही घूमते रहते. And then we provide food, means dinner, lunch or food, that kind of thing for the entire people. So this event we have been doing for many years. अभी कोविड पैंडेमिक में नहीं हुआ, but the people in the tune of around 2.5 to 3,000 people turn around for that event. All tribal people is coming from far off, because उनको मालूम होता है लायंस क्लब का यहाँ पे इस दिन ये प्रोजेक्ट मेला होता है. So people from far off come there, and managing such a huge volume of people with proper arrangement is a challenge in itself. मतलब वहाँ पे एक बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे पूरा पैंडल अरेंजमेंट करना पड़ता है, हर एक सेक्शन बनाने पड़ते हैं. मेडिकल कैंप कहाँ पे होगा, जो चीज़ें बांटनी है उसके अलग अलग स्टॉल्स कहाँ पे होंगे, मेडिकल की टीम कहाँ से आएगी, कौन से हॉस्पिटल से आएंगी, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, पैंडल कवर होना चाहिए रूम कोई ईसीजी के लिए कि ओपन स्पेस चलेगा, फूड बनाने के लिए कैटरिंग का कौन करेगा इतने लोगों का, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसकी टीम कौन सी होगी, साउंड, लाइट, एवरीथिंग सिस्टम. सो दिस बिकम्स अ मल्टीटास्किंग जॉब. और जैसे हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं वैसे इस लेवल पे ये काम करना पड़ता है, ताकि लोग जो आए हुए बहुत सा होप लेके, नो वन शुड गो बैक डिसहार्टेड. अब ये 2,500 3,000 लोग आते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि कोई आदमी आके वापस कुछ सामान मांगे, रिपीट करे.
सो जो चीज़ें, खाना तो हम सबको खिला सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जो चीज़ें बांटनी होती है दैट शुड गो एज अ हाउस होल्ड, नॉट एज अ इंडिविजुअल। सो एक आदमी, एक ही घर में 5 आदमी हैं, वो 5 आदमी आके खड़े हो गए वन बाय वन और सेम चीज़ लेके जाएंगे तो क्या करें? सो वी हैव टू मेक अ टोकन सिस्टम। वी मेक अ टोकन विच इज गिवन 1 टोकन फॉर पर फैमिली। ये सब टोकन्स बिफोर हैंड डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। तो हमारी टीम पूरी सब गांव में जाके, गांव के ग्राम सेवक उनके सरपंच को मिलके सबको पहले से बता के कितने घर है इस गांव में, सबको टोकन्स बांट के ऑन द डे ऑफ इवेंट वी आर रेडी, सो दैट वी आर हैविंग अ टोटल आइडिया कि कितने लोग आने वाले और कितने लोगों को हमको सर्विस देनी है। एंड प्रोजेक्ट के लिए जनरेटिंग रिसोर्सेस, जैसे बेनिफिशियरी तो आ गया, अभी कुछ प्रोजेक्ट भी ले लिया, लेकिन हमारे पास पूरे रिसोर्सेस नहीं है फाइनेंशियली। तो रिसोर्सेस में दोनों आता है, जैसे कि मेगा प्रोजेक्ट मेला जैसा काम हो तो वहाँ पे तो मैन पावर की भी बहुत ज़रूरत है। सो रिसोर्सेस ऑफ वॉलंटियर्स इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम वो इवेंट या वो ज़रूरत, नीड पूरी करने के लिए वी नीड टू रेज सम फंड्स। सो वो कहाँ से करें, इसकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि इवेंट डे आ गया, हमने इवेंट डिक्लेयर कर लिया और फिर हम लोग कहीं पे कभी रह गए, सो दैट इज नॉट अ गुड फॉर द एनजीओ, फॉर योरसेल्फ एंड द पीपल हु आर कमिंग विद सम होप। सो ये बैकग्राउंड वर्क पहले ही करना बहुत जरूरी होता है। जितनी जरूरत हमारी है उससे थोड़ी ज़्यादा हमने प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जैसे मैं बोला कि वहाँ पे हम लोग सबको टोकन वगैरह बांटते थे, फिर भी लास्ट में 100-200 लोग ऐसे आके खड़े हो जाते ही थे कि हमको मिला ही नहीं है सामान। सो वी ऑलवेज हैव टू हैव सम बफर, सो दैट कि कुछ कमी हो गई तो वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड द थिंग्स टू द पीपल। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। व्हाट आर द एडवांटेजेस यू कैन से इन दिस जॉइनिंग एन एनजीओ? सबसे पहले एडवांटेज तो है कि यू गेट अ वेरी गुड कनेक्ट्स। इसके लिए वो बैकग्राउंड क्रॉस चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, किस संस्था में आप जा रहे हो, बिकॉज यू डेवलप अ गुड नेटवर्क ऑफ गुड पीपल एंड बिलीव मी, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। दैट इज 100% ट्रू, बिकॉज बहुत सी चीजें जो है which money cannot do, only your connects and your contacts can do. So you can develop a very good network when you are entering any NGO. Individually, we have limitations to a limited work, but organizations like Lions Club, you'll find best of the people from society. There are other organizations also like Rotary Club also is there, which is also the oldest NGO in the worldwide. These are the international organizations I'm talking. इंडिया में भी बहुत है जो पैन इंडिया बेसिस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे सोसाइटी के अच्छे पार्ट के लोग आते हैं, जिनसे हमारी जान पहचान होती है, हमारे कनेक्ट्स बनते हैं। दिस कनेक्ट्स अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्स इनटू योर करियर ग्रोथ आल्सो इन योर बिजनेस, योर प्रोफेशन एज वेल, बिकॉज व्हेन यू नो पीपल देन यू टेंड टू प्रमोट और हेल्प ईच अदर। अगर किसी को कोई बिजनेस करना है और उसे पता है कि राजेश इज ऑलरेडी डूइंग इनटू दिस सेम लाइन, वो नेचुरली रिकमेंड करेगा। वी डोंट नीड टू डू आवर ओन मार्केटिंग। It's just like we try to help our people or our friend, because you know that person के दिल से, character से कैसा आदमी, you'll definitely not cheat into any transaction, business transaction as well. So this networking helps in a long way to develop your building or business professional career also. Apart from this, there is an immense development in your personality. हमने देखा हुआ है कि जो लोग मतलब 4 लोगों से बात करने में भी जो झिझक जाते हैं, वो लायंस, बिकॉज आई नो लायंस, वी हैव सीन देम स्पीकिंग फ्लुएंटली, फ्लॉलेसली ऑन अ डायस इन फ्रंट ऑफ 300-400 पीपल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली। बस आपकी वो चाह होनी चाहिए कि आप सबके साथ मिले, गो टॉक टू एवरीवन, मेक फ्रेंड्स, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नो अदर पीपल, and you automatically grow into the organization. इसके अलावा सोशल स्टेटस डेफिनेटली आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला कि आजकल तो सब फेसबुक पे आ जाता है। आज लोग पिक्चर देखने के, मूवी देखने के तो भी फेसबुक पे डालते हैं। द सेम वे सोशल मीडिया पे जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं वो सब सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। वो पुरानी बात थी, मतलब हम मराठी में बोलते थे कि गुप्तदान करावं, हे डाव्या हाताने केलेलं उजव्या हाताला पण कळू नये। तो बाएं हाथ से काम किया हुआ दान दिया हुआ और दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। बट नाउ दैट इज नॉट द टाइम। अभी तो
घर जाने के पहले वो प्रोजेक्ट दुनिया में पहुंच जाता है. There is one angle to it also, because as we say, we need to mobilize resources for the amount of work we are doing. So उसका एक एंगल ये है कि जब तक हम लोगों के पास पहुंचेंगे नहीं, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्लब, ये संस्था, ये आदमी क्या काम कर रहा है. तो इसके लिए ये सोशल मीडिया अवेयरनेस आजकल ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, so that people come to know about your organization, the kind of work you are doing. और सबसे इम्पोर्टेंट तो है सेटिस्फैक्शन, विच इज बियॉन्ड वर्ड्स. मतलब जब आप सोचोगे शाम को शांति से बैठ के कि आज ये प्रोजेक्ट करके मैं आया, एंड द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन वी सी ऑन द फेसेस ऑफ द पीपल, that gives a real pleasure, and that is the real stress buster, you can say. आपका पूरी थकान सब निकल जाती है. तो only thing is in social service, you have to be compassionate rather than passionate, because passion driven social service जो है वो कुछ मोटिव से होती है. You want to reach into such a level in this NGO, so you are doing it with lot of passion, but that passion के साथ compassion दिल से जो हो, तभी आप बहुत दूर तक ये काम कर सकते हो. And I wish that some of the other time you should feel that it's time to give back to society and get associated with some NGO, or if not some NGO, few of your friends, or alone, anyway. But this giving back to the society is very, very important. It will help you grow as a person as well. I think that's all from my side. Anything anyone wish to ask anything about this NGO, then all, I'll be happy to answer. Basically, you mentioned about Lions Club and you also mentioned about RSS. Sometimes when I take 2 social projects at a time, I feel overloaded along with work, family and stuff. You were mentioning 2 big organizations. I was curious, how are you managing both at a time? No, I'm not associated with RSS. Abhimanyu is associated with RSS, and RSS was doing one project in Vasai in the education area, with involving all the schools from Vasai Virar region, and that project was supported by Lions Club, and that is how I came in contact with Abhimanyu. So I was just explaining how I came with the contact with Abhimanyu or JanyuTech. So what we say, your network becomes your network. So that network of my and Abhimanyu, which connected through a social media or social work, it has led to this our professional engagement as well. Rajesh, one more point. Being working in this thing, after all, we are humans, right? We expect some appreciation at the end of the work, but not every time we are blessed to have the appreciation. Many times it ends up in a बहुत बड़ा criticism भी हो जाता है, right? साल पूरा रहता है वो, because your mistakes are appreciated more or elaborated more. So how do you handle such situations? So personal clarity in the thoughts is the only solution on this, because ये individual के ऊपर ही है. There is no formula, because how matured as a person is, it will the reaction to the incident will depend on that only. Definitely in the larger picture we have to see that our aim or goal of associating with the NGO or with the social services to reach out or help to the people. If that is getting benefited, means वो काम हो रहा है, then though you are not getting the credit of this work, but ultimate goal is achieved, then you should have a big heart to accept that, okay, ultimately my purpose is getting solved. Because हर एक organization में, let it be a social organization, there are people with the ambitions, they always want to take credit for everything. तो ये तो unavoidable है. जहाँ पे 2 विचार आ गए 2 आदमी के, तो वो तो clashes तो होने ही है. So the one with the bigger heart will always see that, चले मेरे पर्सनल ईगो के लिए ये कुछ अच्छा काम जो हो रहा है, I should not stop that. Let that work happen. Let the beneficiary get benefited. उसका काम हो जाए. मुझे जो मिलना है वो भगवान दे देगा. That is the only way. This one, Rajesh ji, I was interested in asking you, can you initiate or request our team members to contribute weekly towards the education? We have a lot of young engineers, and towards the tribal schools, as you are telling, there are so many schools around.
we can have interactive video calls or video sessions for the subjects, and most of our our employees or our engineers are highly qualified. Right? They are from very mega institutions. So can we ask them to donate 2 of their hours every week or something like that? Can you initiate? I'll also be participating in that. Definitely, sir. We can do that. ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है. There is one Jilla Parishad school just 10 minutes from our office, Boidapada Jilla Parishad school. And through Lions Club, we have done a lot of infrastructure work there. वहाँ पे almost around in the tune of around 8 to 10 lakhs rupees का पूरा infrastructure काम हमने करके दिया है वहाँ पे. This is on the infrastructure part, but as definitely said by you, the students will need a better guidance from our side, and we can we'll try to, once the school starts now, it's a May vacation. Okay. अगले साल में जून के बाद में we'll definitely approach different schools in our area, so that at least on the weekdays, some 1 or 2 hours we can go and take some sessions. That will be helpful, sir. If you can share opinion on the following quote: professional work is itself a social service in many ways. Yeah, definitely. Professional work itself is a social service in many ways, definitely. Because once we run some industry, and that industry provides the employment for many people, that runs the family, help them run their families, give the education to their children. So it is all in a chain reaction, you can say. Everything is connected. So whatever way your contribution to society, as long as you're not doing any harm to the society, you're definitely contributing positive to the society. That is for sure. So either you stay idle or do something positive, but don't do something negative. Doing nothing also is good, one way, So definitely we should excel in our professional. We should keep growing. At Janu, we have a big targets to grow ahead. As the company grows, a lot of people will get connected with company. A lot of employment will be created, and there will be many opportunities for the young students and engineers from the country to connect with us and reach out to their ambition, goals, and everything. Thank you, everyone.